हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक कवर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके पहले भी अपन ने मिनिमम 8 to 9 वीडियोस पोस्ट किए जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर से कंप्यूटर के। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे तो डायरेक्टली अपने प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपने को मिल जाए, क्योंकि इसके बाद अपन मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन क्वेश्चन है फर्स्ट अपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन लेटेस्ट वर्जन। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड डॉट पीपीटीएक्स। नेक्स्ट सेकंड, विच टैब इन एमएस पावर पॉइंट कंटेन ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग न्यू स्लाइड्स। देखो ऑप्शन है यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, स्लाइड शो। करेक्ट आंसर है यहाँ पे होम। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। तो देखो ऑप्शन है टू ऐड एनिमेशन टू स्लाइड, थर्ड टू कंट्रोल लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑल स्लाइड, थर्ड टू क्रिएट न्यू स्लाइड डिजाइन एंड फोर्थ टू इंसर्ट मल्टीमीडिया एरिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टू कंट्रोल द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल स्लाइड्स। नेक्स्ट फोर्थ, which features in PowerPoint is used to add text to a slide। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट बॉक्स, स्लाइड लेआउट, स्मार्ट आर्ट। तो करेक्ट आंसर है आपके सेकंड टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे F1, F5, कंट्रोल प्लस F, शिफ्ट प्लस F5। तो कंट्रोल आंसर है सेकंड F5। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। देखो ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी। आंसर है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो एक ऑप्शन है यहाँ पे टाइटल स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, टू कंटेंट, कंपैरिजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट 8, हाउ कैन यू ऐड न्यू स्लाइड विथ सेम लेआउट एज अ प्रीवियस स्लाइड। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस प्री एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट 9, वेयर कैन यू फाइंड डिफरेंट स्लाइड लेआउट। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डिजाइन टैब, सेकंड स्लाइड शो टैब, थर्ड व्यू टैब एंड फोर्थ होम टैब। तो करेक्ट आंसर है लास्ट होम टैब। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोट्स सेक्शन इन पावर पॉइंट। तो देखो ऑप्शन क्या है टू ऐड कमेंट फॉर ऑडियंस, सेकंड टू ऐड स्पीकर नोट दैट आर नॉट विजिबल टू ऑडियंस, थर्ड टू ऐड एनिमेशन एंड फोर्थ टू ऐड इमेजेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड टू ऐड स्पीकर नोट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द ऑडियंस। नेक्स्ट 11, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजाइन टैब इन पावर पॉइंट। तो देखो ऑप्शन क्या है to add new slides, second to format the appearance of slides, third to insert images and fourth to add animation। correct answer है आपके second to format the appearance of slides। next 12, how can you change the background of all slides in a presentation। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड, सेकंड चेंज लेआउट, थर्ड इंसर्ट पिक्चर एंड फोर्थ चेंज स्लाइड मास्टर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट format background। next 13, what is the purpose of theme in PowerPoint। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे it set color font effects for all slide, second it create animation, third it add multimedia and fourth it control slide transition। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट it set color font and effect of all slides। next 14, how can you align text in PowerPoint slides। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल, सेकंड मैन्युअली मूविंग द टेक्स्ट, थर्ड यूजिंग द अलाइन ऑप्शन अंडर द होम टैब एंड फोर्थ यूजिंग द फॉर्मेट टैब। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड यूजिंग द अलाइन ऑप्शन अंडर द होम टैब। नेक्स्ट 15, which features allows you to maintain the consistent design across all slides। देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइड मास्टर, सेकंड लेआउट, थर्ड एनिमेशन पैन एंड फोर्थ नोट्स पैन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड मास्टर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए।
नेक्स्ट 16 वेयर कैन यू फाइंड एनिमेशन इफेक्ट इन PowerPoint? तो देखो ऑप्शन है स्लाइड शो टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब एंड रिव्यू टैब। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड एनिमेशन टैब। नेक्स्ट 17 व्हाट टाइप ऑफ एनिमेशन मेक एन ऑब्जेक्ट डिसअपियर फ्रॉम अ स्लाइड? तो देखो ऑप्शन है एंट्रांस, एग्जिट, मोशन पाथ, एम्फेसिस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एग्जिट। नेक्स्ट 18 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन फीचर इन PowerPoint? तो देखो ऑप्शन क्या है टू ऐड एनिमेशन टू द ऑब्जेक्ट, सेकंड टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड, थर्ड टू अप्लाई इफेक्ट व्हेन मूविंग बिटवीन स्लाइड्स एंड फोर्थ टू ऐड मल्टीमीडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड टू अप्लाई इफेक्ट्स व्हेन मूविंग बिटवीन स्लाइड्स। नेक्स्ट 19 विच मल्टीमीडिया एलिमेंट कैन बी एडेड टू द PowerPoint स्लाइड्स? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ऑल ऑफ द। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 20 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्ले स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस P, अल्टर प्लस F। तो करेक्ट आंसर है सेकंड शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट 21 विच व्यू इन PowerPoint इज यूज टू एडिट स्पीकर नोट्स? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू, सेकंड नॉर्मल व्यू, थर्ड नोट पेज व्यू एंड फोर्थ रीडिंग व्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड नोट पेज व्यू। नेक्स्ट 22 हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन PowerPoint? देखो ऑप्शन है इंसर्ट देन हाइपरलिंक, then view, then hyperlink, third design and hyperlink and fourth animation hyperlink। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इंसर्ट एंड हाइपरलिंक। नेक्स्ट 23 व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिफ्रेश टाइमिंग फीचर? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टू प्रैक्टिस स्लाइड ट्रांजिशन, सेकंड टू टेस्ट एनिमेशन, थर्ड टू टाइम द प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली एंड फोर्थ टू रिकॉर्ड ऑडियो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड टू टाइम द प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट 24 हाउ डू यू एग्जिट अ स्लाइड शो इन PowerPoint? देखो ऑप्शन है प्रेस एस्केप, देन प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स, देन एस्केप, क्लिक ऑन एंड स्लाइड शो एंड क्लोज द पेज। तो आंसर है प्रेस एस्केप। नेक्स्ट 25 व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल इन PowerPoint? देखो ऑप्शन है यहाँ पे 100%, 200%, 500%, 400%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 400%। नेक्स्ट 26 विच व्यू डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, आउटलाइन व्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट 27 व्हाट इज द पर्पज ऑफ आउटलाइन व्यू इन PowerPoint? तो देखो ऑप्शन है टू एडिट स्लाइड कंटेक्स्ट इन द फॉर्मेट, सेकंड टू डिस्प्ले ओनली इमेजेस ऑन स्लाइड, थर्ड टू एडिट एनिमेशन इफेक्ट एंड फोर्थ टू फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू एडिट स्लाइड कंटेंट्स इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट 28 हाउ कैन यू स्विच टू स्लाइड सॉर्टर व्यू? देखो ऑप्शन है यहाँ पे व्यू, देन स्लाइड सॉर्टर, सेकंड होम एंड स्लाइड सॉर्टर, थर्ड इंसर्ट स्लाइड सॉर्टर एंड फोर्थ डिजाइन सॉर्टर। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट व्यू स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट 29 What is the function of reading view in PowerPoint? तो देखो ऑप्शन है टू प्रीव्यू अ प्रेजेंटेशन विदाउट एडिटिंग ऑप्शन, सेकंड टू एडिट स्लाइड, थर्ड टू डिस्प्ले स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड, फोर्थ टू क्रिएट स्लाइड प्रेजेंटेशन। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू प्रीव्यू अ प्रेजेंटेशन विदाउट एडिटिंग ऑप्शन। नेक्स्ट 30 विच पैनल अलाउज यू टू रिकॉर्ड अ स्लाइड क्विकली? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नोट पेन, स्लाइड सॉर्टर, एनिमेशन पेन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट 31 व्हाट इज द यूज ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल इन PowerPoint स्लाइड? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टू डिस्प्ले न्यूमेरिकल डेटा, सेकंड टू ऐड बैकग्राउंड इमेज, थर्ड टू चेंज स्लाइड लेआउट एंड फोर्थ टू अप्लाई एनिमेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू डिस्प्ले न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट 32 हाउ डू यू इंसर्ट अ चार्ट इन PowerPoint? तो देखो ऑप्शन है इंसर्ट, देन चार्ट, देन होम, चार्ट, डिजाइन चार्ट एंड स्लाइड शो। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इंसर्ट एंड चार्ट। नेक्स्ट 33
what which of the following chart type is not available in PowerPoint? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, फ्लो चार्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फ्लो चार्ट। नेक्स्ट 34, हाउ कैन यू एडिट डेटा इन एन इंसर्टेड चार्ट? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक ऑन चार्ट एंड देन चूज एडिट डेटा, देन सेकंड राइट क्लिक ऑन चार्ट एंड चूज फॉर्मेट चार्ट, थर्ड insert new chart over the old one, and fourth change the chart layout option। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट क्लिक ऑन द चार्ट एंड चूज एडिट डेटा। नेक्स्ट 35, which tool is used to organize text into row and column? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, स्लाइड। तो यहाँ पे आंसर है यहाँ पे टेबल। नेक्स्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। नेक्स्ट है अपने पास 36, व्हाट इज स्मार्ट आर्ट यूज्ड फॉर इन पावर पॉइंट? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे टू क्रिएट प्रोफेशनल डायग्राम एंड ग्राफिक्स, सेकंड टू एडिट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सेकंड टू एनिमेट स्लाइड, एंड फोर्थ टू ऐड हाइपरलिंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू क्रिएट प्रोफेशनल डायग्राम एंड ग्राफिक्स। नेक्स्ट 37, हाउ कैन यू ऐड वर्ड आर्ट टू द स्लाइड? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे यू इंसर्ट वर्ड आर्ट, सेकंड डिजाइन वर्ड आर्ट, थर्ड स्लाइड शो वर्ड आर्ट, एंड फोर्थ व्यू वर्ड आर्ट। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इंसर्ट वर्ड आर्ट। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी इन स्मार्ट आर्ट? देखो अपने ऑप्शन है प्रोसेस, हायरार्की, 3D एनिमेशन, रिलेशनशिप। तो आंसर है यहाँ पे 3D एनिमेशन। नेक्स्ट 39, what does word art allows you to do? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट डेकोरेटिव टेक्स्ट इफेक्ट, सेकंड इंसर्ट वीडियोस, थर्ड चेंज स्लाइड ट्रांजिशन, एंड फोर्थ ऐड कमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट डेकोरेटिव टेक्स्ट इफेक्ट। नेक्स्ट 40, विच फीचर्स हेल्प टू अरेंज शेप्स एंड टेक्स्ट इन विजुअली अपीलिंग वे? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, स्लाइड मास्टर, नोट पैन, कमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्मार्ट आर्ट। Next 41, which view is best for printing handout with notes? देखो ऑप्शन है यहाँ पे नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड स्लाइड फर्स्ट नोट पेज व्यू। ओके। नेक्स्ट 42, what is the default option when saving a PowerPoint file? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज image, save as PDF, save as presentation, and save as template। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड save as presentation। नेक्स्ट 43, हाउ कैन यू एक्सपोर्ट अ PowerPoint presentation as a video? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट क्रिएट अ वीडियो, सेकंड इंसर्ट वीडियो एक्सपोर्ट, थर्ड स्लाइड शो सेव एज अ वीडियो, एंड फोर्थ व्यू एक्सपोर्ट एज अ वीडियो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट फाइल एक्सपोर्ट एंड क्रिएट अ वीडियो। Next 44, what is the purpose of print preview option? देखो ऑप्शन क्या है टू प्रीव्यू स्लाइड बिफोर प्रिंटिंग, सेकंड टू क्रिएट अ PDF फाइल, थर्ड टू सेट अ बैकग्राउंड कलर, एंड फोर्थ टू एडिट एनिमेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट टू प्रीव्यू स्लाइड्स बिफोर प्रिंटिंग। नेक्स्ट 45, हाउ कैन यू सेव अ प्रेजेंटेशन एज अ PDF? तो देखा देन फाइल सेव एज एंड चूज PDF फॉर्मेट, second insert save as PDF, third slideshow save as PDF, and fourth design export as a PDF। तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट फाइल सेव एज चूज अ PDF फॉर्मेट। ओके। नेक्स्ट 46, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ PowerPoint प्रेजेंटेशन विद पासवर्ड? तो देखो फाइल इन्फो प्रोटेक्ट पासवर्ड, सेकंड इंसर्ट सिक्योरिटी, थर्ड होम पासवर्ड प्रोटेक्ट, एंड फोर्थ व्यू रेस्ट्रिक्टिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट व्यू फाइल इन्फो प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट 47, व्हाट डज कंपेयर फीचर डू इन PowerPoint? तो देखो ऑप्शन क्या है कंपेयर टू प्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंसेस, सेकंड क्रिएट न्यू स्लाइड लेआउट, थर्ड ऐड एनिमेशन, एंड फोर्थ चेकिंग स्पेलिंग ग्रामर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट कंपेयर टू प्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंसेस। ओके। नेक्स्ट 48, what is the function of ink annotations features in PowerPoint? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट टू ड्रॉ ऑन स्लाइड्स यूजिंग स्टाइलस और माउस, सेकंड टू इंसर्ट वीडियोस,
थर्ड टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड फोर्थ टू एनिमेटेड टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू ड्रॉ ऑन स्लाइड यूजिंग स्टाइलस और माउस। नेक्स्ट 49, हाउ कैन यू क्रिएट अ लूपिंग स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो, लूप कंटिन्यूअसली, सेकंड फाइल लूप, देन डिजाइन स्लाइड लूप एंड इंसर्ट एनिमेशन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सेटअप स्लाइड शो, लूप कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट 50, what does presenter view features do। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, allow the presenter to view notes and next slide while presenting, second show only the slide content, third edit slides during the presentation and fourth create new slide automatically। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, allows the presenter to view notes and next slide while presenting। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर, पीएनबीएसओ, महाट्रांसफर एलडीसी, पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ, आईडीबीआई असिस्टेंट बैंक, इन सभी के मॉक पेपर सॉल्व करेंगे एंड जनरल स्टैटिक कंप्यूटर केस के कंटिन्यू वीडियोस अपन सॉल्व कर ही रहे थे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।